जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अपने बहुत ही इलस्ट्रियस सीनियर के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा जो फौज में कमीशन हुए थे इन द सेम रेजिमेंट, दो डिफरेंट यूनिट दैट आई सर्व्ड, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। सर अलग पलटन में थे। सर in 2001, sir joined the JAG branch. JAG is the Judge Advocate General, that's the military law that they do. 2021 में सर सेवानियुक्त हुए और फौज से वर्दी टांगी अपनी बाहर आए। Today, sir has a very successful legal consultancy, and in fact, he's one of the leading lawyers. फौज के खास तौर से जितने भी केसेस होते हैं, the first choice, the name is कर्नल मुकुल देव। हर जगह पे सर का नाम है। अब बहुत लोग कहेंगे कि कर्नल मुकुल देव इतने कामयाब हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, he got lucky. Well, when preparation meets opportunity, it is luck. And कर्नल मुकुल देव साहब की ये खास बात है कि he is well prepared all over, not just the cases that are assigned to him that he's working on. He is hard pressed on time, but he keeps himself abreast with most of the legal matters. So he's been very kind enough. So I asked him, sir, पटियाला केस में, कल बात के केस में सब जानते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा अगर आप प्लीज वक्त निकालें लीगल एस्पेक्ट्स में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, वो आप समझाएं, आई विल बी रियली ग्रेटफुल। सो आई सेड एनीथिंग फॉर अ ब्रदर ऑफिसर, एंड हियर आई एम in conversation with Colonel Mukul Dev. Ladies and gentlemen, please welcome Colonel Mukul Dev. Sir, Jai Hind, and thank you very much for taking your time, sir. Good evening, Mohammed, and thank you very much for inviting me on this platform. And yes, whatever to the best of my endeavor I can help or say, I will definitely bring out. Tell me what is required to be answered. हमने देखा कि होली से एक दिन पहले तकरीबन 13 तारीख को कर्नल बाद साहब उनके बेटे 21 साल के अंगद के साथ जिस तरीके से सम आई वुड से मिसक्रिएंट्स, आई वुड से क्रिमिनल्स ने जो हरकत करी, लोग कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के थे। मैं पंजाब पुलिस इज आई पर्सनली थिंक दे हैव बीन अ प्रोफेशनल फोर्स, तो मैं पंजाब पुलिस पे नाम नहीं लूंगा। मैं कहूंगा ये 12, क्योंकि अगर 12 बैड एग्स do not represent the entire force. So मैं कहूंगा जो 12 क्रिमिनल ने उनके साथ किया, उसके बाद फिर मिसेस बाथ had a tough time in going from pillar to post, trying to get an FIR done, and the SSP apparently he met the GOC, I'm told, and he said FIR हो गई है, मगर इन्होंने झूठ बोला। FIR हुई थी ढाबे वाले की तरफ से, and whereas Colonel Bath is the victim over here. So legal aspects इसके क्या हो सकते हैं? How strong a case do Mrs. Bath have, and what can be done about it, sir, legally? What do you think, sir? Yes, I would like to clarify. Firstly, it's a very unfortunate incident which took place that night. But, Mohammed, this is not the first time that this has happened. However, the deafening silence which is there from our higher ups this time is actually troubling me. उस रात जो भी कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। अगले दिन जिस प्रकार से उस ढाबे वाले से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया वो भी हम सबके सामने है। द फैक्ट रिमेन्स कि उस रात उस ढाबे वाले ने जब मिसेस बाथ, द हैपलेस लेडी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उस ढाबे वाले ने खुद ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दी थी, ये कह के कि अभी आपको जो चाहिए वो ले जाइए, कल सुबह तक सब कुछ बदल चुका होगा। That goes to prove and show that yes, even dhaba owner was aware that how the Punjab police will function or will work now onwards. उस रात जो मेरे को पता लगा, the lady was running with her brother-in-law from one police station to another police station. वो SSP से भी मिली। मुझे ये भी पता लगा कि एक particular SHO was very kind to her and he even cried seeing her situation and tried to pacify her and tried to console her, but beyond that he was unable to help us and he even said कि कल तक सुबह तक मुझे भी सस्पेंड कर देंगे अगर इसके आगे मैं चला तो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एसएसपी मिस्टर नानक के साथ। in 2019-20 he was posted in Bhatinda when COVID broke out. We were working in tandem. I always thought Mr. Nanak was a good IPS officer. Unfortunately, I was wrong. What I have seen now, after all, we all are in uniform, and I consider that we all are brother officers, whether it's from armed forces, whether it's from paramilitary forces, whether it is Assam Rifles, whether it is army, police, whatever you may say. उस रात जो भी कुछ हुआ, it is heartbreaking.
ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है, पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है हम लोगों ने उसको ठीक से हैंडल किया है। अभी भी ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उस समय सोचा कि सबको हमको बचा लेना है और किसी तरह से इसको हशप कर देना है। वो वीडियोस जो मैंने देखे जिसमें वो 4 पुलिस वाले माफी मांग रहे हैं उस लेडी से, दैट वेरी क्लियरली शोज कि यस देयर वाज समथिंग रॉन्ग। आज की तारीख में मुझे आज एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जहां पंजाब पुलिस की कोई इनकी भी कोई वो है, यूनियन है पुरानी एक्स पुलिस ऑफिशियल्स की, और उन्होंने धमकी दी है आज शाम को ये कहते हुए कि आप ये मत समझिए कि हम लोग पीछे हटेंगे, हम भी कल गुरुद्वारे में चंडीगढ़ में कोई मीटिंग कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, और ये जो रंग बिरंगी आप ऑडियोज और वीडियोज डाल रहे हैं हम इसका बदला लेंगे। द वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैव बीन यूज्ड, and after some time I'll put it on social media also, that audio which has come to me today, that goes to prove that that bonhomie which used to exist for so many years. I have operated in Punjab during Rakshak, when Punjab was very badly affected with the militancy. I have myself seen one such situation wherein I was forced to take action against a particular police station which is located at Ludhiana and Moga highway, that is known as police station Mehna, wherein they have thrashed a CHM of 19 Punjab, and I had to take certain such actions which were at that time not palatable to so many people, but later on people realized that that was the only option which was to be dealt with accordingly. लेकिन आज जो कुछ हुआ है, हम लोग अगर साथ खड़े नहीं हुए कर्नल एंड मिसेस बात के, देन कल ये किसी और हमारे भाई के साथ भी हो सकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं उड़ीसा में जो कुछ हुआ उस ऑफिसर के साथ और उसकी फियांसी के साथ, वो भी मैंने आवाज उठाई थी। राजस्थान में जो कुछ हुआ, 2 बार हो चुका राजस्थान में, एक बार जोधपुर का केस है जिसमें वो ऑफिसर छुट्टी आया हुआ था आगरा में, ग्वालियर में, जहां उसको पुलिस ने मारा। उसके अलावा एक और भी केस हुआ है जयपुर में जहां एक जवान को पुलिस वालों ने मारा। अगर हम इसको ठीक से आगे नहीं ले जाएंगे, पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठेगा, तो इसके ऊपर कभी लॉ नहीं बनेगा। आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम बड़े शान से कहते हैं, हमें गर्व है अपने ऊपर कि हम अपने देश की सरहदों को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं अपने देशवासियों को। लेकिन देश के अंदर हमारे खुद के साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम और हमारा देश हमारे सैनिकों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो ये सैनिक कहां से देश की सुरक्षा करेंगे? ये एक बहुत ही गलत साइन है आज की सिचुएशन में। इस समय जितने मुश्किल हालात से मिसेस बात गुजरी हैं, और वो पहले एक एफआईआर नंबर 65 लॉन्च की गई जो कि ढाबे वाले की तरफ से लॉन्च की गई, विच वाज नथिंग बट ए ट्रैश, एंड एसएसपी मिस्टर नानक ही ट्राइड टू मिसगाइड एंड मिसलीड एवरीबडी बाय सेइंग इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट एफआईआर नंबर 65 हमने रजिस्टर कर ली है और एक्शन लिया जाएगा, और मैंने 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। उसने 12 पुलिस वालों को इसलिए नहीं सस्पेंड किया था कि ही वांटेड टू सस्पेंड देम, it is just because GOC one armored said that I don't want anything less than the suspension of these 12 chaps. Otherwise in that meeting he was only offering कि मैं 2-3 बंदों को सस्पेंड कर देता हूं। Why 2-3 बंदे when everybody was involved? If this kind of a thing can happen with a serving or a ex-serviceman, then we can very well imagine what will happen to a normal citizen or any citizen of the country. आए दिन हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में about police atrocities, the kind of torture which they inflict upon the prisoners or the people who are in their lockup, the kind of corruption which is existing. It's very, very long since the time when it was said that there is a requirement of police reforms. There was a committee which was formed. That committee gave a report that there is a requirement of police reforms. But till date, nobody has bothered. Our politicians, they are using these policemen as their personal and private army or their personal fiefdom. They are using them, they are unleashing them during the elections to make their own agendas successful. एफआईआर लॉन्च हुई एक, उसके बाद में फिर एजिटेशन हुआ। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे एक सर्विसमैन पंजाब के सामने आए, उन्होंने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मोहाली में भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसके बाद में प्रोटेस्ट किया कल डीसी पटियाला के सामने, और अब एक एफआईआर लॉन्च हुई है। लेकिन मैं यहां तक ही सीमित नहीं रखूंगा अपने आप को। इस एफआईआर लॉन्च होने के बाद में एक एसआईटी भी इन्होंने गठित की है। आई डिमांड कि देयर शुड बी ए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वेयरइन आर्मी पर्सनल आल्सो शुड बी coopted in. Earlier also it has happened. It is not for the first time that it has happened, that armed forces personnel and police personnel, they have conducted joint investigation in such matters. Otherwise, I very well know the way the Punjab police is trying to protect its personnel, they will again do it.
मेरा तो सजेशन था कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते, either through a PIL or through a petition from Mrs. Bath's side, and we should have demanded a CBI inquiry. आए दिन हम सुनते हैं कभी टोल बूथ के ऊपर झगड़ा हो रहा होता है किसी का, जबकि टोल टैक्स इज नॉट supposed to be paid by armed forces personnel who are on duty. I'm not talking about the retired person, but yes, anybody who is on duty, he's supposed to pay that. He's not supposed to pay that toll tax. It is exempted under a central law which is known as Indian Tolls Act. However, none of our senior hierarchy people, they ever support us in that. आए दिन झगड़ा होता है टोल टैक्स के ऊपर, पुलिस को कहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। उसके बाद में इस तरह के केसेस होते हैं, जवान हमारा छुट्टी जाता है 2 महीने के लिए, उसके गांव में कुछ झगड़ा हो रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस दूसरी पार्टी से पैसे ले लेती है, कुछ नहीं करती है। दो I am in possession of a memoranda which has been issued way back in 60s by the Ministry of Home Affairs, and that memoranda very clearly brings out that in any such cases, help, all possible help will be rendered to the armed forces personnel. But that is only on paper. Nobody helps us. Nobody does anything. If you go to the court, there is definitely a provision in court wherein priority of litigation has been given. Even that is not functional. Nobody pay any heed to our people. Now this FIR has been lodged, the second FIR, the SIT has been formed. Let's hope that they will do something, but we should not lower our guard. We should relentlessly pursue whatever has happened in the past and towards the, I would say, a logical conclusion or a ending to this FIR as well as the SIT report which comes. And if need be, we should go and knock the doors of the court. This nonsense which is going on cannot be tolerated and it has to be put to an end ultimately. सर ये आपके का एक फ्रेश ऑडियो आया है आपके पास में, इफ उसके बारे में जरा बताएगा, व्हाट वाज दिस फ्रेश ऑडियो, टू हु, इट्स एन ऑडियो और अ वीडियो सर? An audio has come. If you want to hear, I can play it just now. Oh yes, we would love to, sir, please. Here it is. I'm playing this audio just now. You will listen yourself. You will hear this thing yourself, that what this fellow is saying. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਰਨਲ ਬਾਟਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਤਾ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਟ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੰਗ ਪੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਟੋਲਰੇਬਲ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਅਗਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਖਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਨਲ ਬਾਟ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਬਡਕਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੁਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਲ ਬਾਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This is the audio which I have received just now, about 10 minutes back. So very brave of you to have played it live on this. And so this is a telephonic conversation. So you mean someone is threatening Colonel Bot? Colonel Bot. That's right. तो उनके साथ फोन पे किसी ने ये बोला है ये? I do not know उनको बोला है या ये एक रिलीज करी गई है ऑडियो पर्पसली कि भाई everybody should get back or step back whatever is happening. But yes, it is an authenticated audio. It has been sent to me by a person who is of some repute, and this is not a fake audio. Sir, you absolutely, sir. आपने जो, and we all trust, we all know कि it definitely can't be a fake audio. The kind of reputation and the stature you have, sir. Sir, do you think it is जो videos हमने देखे of the miscreants apologizing to Mrs. Bath and saying कि बहन जी माफ कर दो and such things?
And so, do you think these people, the miscreants, are because court as per legalities हो जाता है, forensics में check होना है, ये होता है. Do you think they can have their share of manipulation and trying to prove that the recordings are fake? They will try all stunts, whatever is possible. That's why I expected that people will adhere to or accept what I was suggesting for a CBI inquiry. But still, I say that after this SIT report comes, we should get this case moved out of Punjab. You see, at one point of time, I heard that Mrs. Bath wanted to approach Punjab and Haryana High Court. As far as I am concerned, it would have amounted to going from scissor to scissors wife. After all, Punjab and Haryana High Court is being provided security by the same police. So, in essence, I don't expect anything from Punjab and Haryana High Court. You see, the case of Godra or any other such trials which were there in the case of Best Bakery in Gujarat and all those Ahmedabad, all those cases were moved out of the state. It went to Maharashtra. The punishment was inflicted by Maharashtra courts. Then why can't this case be moved out of Punjab? Let there be a fair inquiry. On one hand, they are saying that they have suspended those 12 people. On the other hand, yesterday I heard that special DGP Law and Order who says that we have moved them out of Patiala to different districts. Under suspension, if you are moving them, I fail to understand how it is possible. It's all an eyewash. This trial should be conducted, the investigation as far as trial is concerned, both should be conducted outside Punjab. Then only we can expect some ray of hope or some justice. Within Punjab, they will hush it up. They have been doing it in the past also. I am reminded of a case of Lieutenant Colonel Vats in the year 1992. Thereafter, I am reminded of a case of Lieutenant Colonel Harnek Singh of an artillery regiment in Faridkot. I know nothing happened. Yes, thereafter, whatever I did in Moga, in that police station, Mehna, thereafter, the Punjab Patrika has published that we are taking revenge of those two incidents. No, I have not taken the revenge of those two incidents of Lieutenant Colonel Harnek Singh or Lieutenant Colonel Vats, which happened in Chandigarh. Lieutenant Colonel Harnek Singh case happened in Faridkot. But what I did was for a CHM. But today, neither that kind of a leadership is available to us. You have seen in 2018 what has happened in Arunachal Scouts, that CEO who was dealing with that. Ultimately, when he did not relent, the then Raksha Mantri, Mrs. Sitaraman, had to go herself to Arunachal to resolve the issue. Every Firdaus, sir. Yes, that's what I'm saying. It's a 71 course. Yes, and our hierarchy wanted an action to be taken against him, which the then GOC 4 Corps refused to take. He said, "Don't touch my boys. If you touch my boys, yes. I will." Yes. Right. It was in 2018 that incident took place. We need such kind of a leadership. But if we don't help our leaders like this, our CEOs like this, tomorrow who is going to take a stand for our boys? The bonhomie, the brotherhood which we boast about. No. Who will join army thereafter? If this is the situation. Sir, I know you are busy and you've been very kind and gracious and generous enough. And I know when you were logging in that time, we call I thi us time pe, and you have to return back several calls. And balki maine observe bhi kiya, sir, while you were looking at your phone because you were getting calls. So I won't take much of your time, sir. Sir, I sincerely thank you for throwing light on this, sir. It was invaluable, sir. These 18 minutes jo TED ka time hota hai, spent with you were invaluable, and thank you very much. And thank you very much for sharing this audio as well, sir. Thank you, Mohammed. I'm grateful to you. Thanks a lot. Have a nice day. Bye. Jai, sir. Jai.